the big twist to the Choksi crackdown, Aam Aadmi Party is saying that red carpet has been rolled out for fugitive. Now remember, the name of fugitive diamantaire Mehul Choksi has been removed from the Interpol database of red notices, as you just heard Radhika Chadda allude to that point. In fact, this comes on the basis of a plea to the Lyon headquartered agency. In fact, 4 years after adding Choksi's name to its red list, the red corner list, which is of Interpol's decision, came as a huge setback for the CBI and the Indian government. In fact, the red corner notice is the highest form of alert which is issued to try and locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender or any other legal action. In fact, RCN was removed following a petition by Choksi to Interpol. In fact, in 2021, Choksi had alleged that there was an abduction bid on him by Indian agencies, and Indian agents then had taken him from the Caribbean nation of Antigua and Barbuda, where he was staying, to Dominica, and this was done illegally. And this is where the name of the Indian agencies and their alleged sleuths had come up. After that, RCN was removed from Mehul Choksi. That essentially means now he can freely move about without being stopped at the borders. जो लीगल टीम काफ़ी टाइम से कंटेस्ट कर रही थी, और जबकि अब एंटीगुआ पुलिस ने कह दिया कि हाँ, किडनैपिंग का अटैम्प्ट जेन्युइन है। उन्होंने काफ़ी सारे जो किडनैपर्स थे उनके खिलाफ रादर आरसीएन इशू कर दिए हैं। तो इसलिए मेरे क्लाइंट का जो आरसीएन है वो इंटरपोल ने ये सारी चीज़ें देखते हुए कि उसके साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है और जो है उसको एक आदमी को होमलेस तो डिक्लेयर किया नहीं जा सकता, एंटीगुआ में रह रहा है तो उसको वहाँ से भी किडनैप किया जा रहा है, ये देखते हुए, और उसकी जो है तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इस बात को देखते हुए उन्होंने आरसीएन विड्रॉ कर दिया है इंटरपोल ने। आरसीएन विड्रॉ का मीनिंग ये है कि जब इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे आरसीएन इशू किया गया था तो मिस्टर मेहुल चोकसी कहीं भी ट्रैवल करते अगर एंटीगुआ से, तो उनको एप्रीहेंड करके इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता। वो अब नहीं होगा। अब ही इज़ फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। तो अब भारत में जो उनके खिलाफ केस चल रहे हैं उन पर इसका क्या असर? उस पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो क्रिमिनल लिटिगेशन चल रही है वो चलती रहेगी। बस सिर्फ जो एक ये जो उनको एप्रीहेंड करने का मैकेनिज्म था यहाँ पर कि गवर्नमेंट के हाथ में और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ में, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। और इनकी जो फ्यूजिटिव की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आपको पता है विजय माल्या, नीरव मोदी सारे लोग फ्यूजिटिव हो गए हैं, मगर मेहुल चोकसी पे मैंने स्टे लिया हुआ है मुंबई हाई कोर्ट से। वो प्रोसीडिंग अभी चल रही है, वो चलती रहेगी। मेहुल चोकसी के खिलाफ जो भारत में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनका फिलहाल क्या स्टेटस है आपके? उनका वो देखो, आप कह रही हैं कि वो चल रही हैं, चल तो रही ही नहीं है। अभी जब हाईकोर्ट ने विपुल चैतालिया को बेल दिया तो भी ये बताया है, उसमें आप ये देखें कि 4-4 साल बाद बेलें हुई हैं और प्रोसीडिंग चल ही नहीं रही है। इट हैज़ नॉट मूव्ड एन इंच एंड आई डोंट थिंक कि मैं अपने लाइफ टाइम में आई विल सी एनी रिजल्ट इन दोज केसेस। भारत के ऑफिसर्स ने जो आरसीएन के लिए डॉक्यूमेंटेशन दी थी, उस पर क्या इंटरपोल ने कुछ कहा है? ये इंटरपोल की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो आई कैन टेल ओनली द फाइनल रिजल्ट, नॉट द फाइनल डिटेल्स। Well, right after the development you just heard, the Aam Aadmi Party as well as the other opposition leaders like the Congress Shiv Sena, they've all gone after the centre, saying that there is red carpet which has been rolled out for fugitives. Let's also listen in to Congress President Mallikarjun Kharge. देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए, हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। मेहुल चोकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले, देशभक्ति की बात करना, ये एक मजाक है। देखिए, अगर सीबीआई ने अपने काम पे ध्यान दिया होता और ऐसे जो गुनहगार हैं जो देश छोड़कर भाग गए हैं, नीरव चोकसी हो, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, उनको वापस देश में ले आया जाता, तो आज देश के लिए भी जो जिन लोगों का पैसा खाकर भागे हैं वो फायदा होता। पर अगर सीबीआई अपना जो काम है उस पर डटी रहती, पर सीबीआई का क्या काम हो गया है? भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन टूल किट रह गई है। सीबीआई क्या करती है? ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर अटैक करती है। ऑपोजिशन लीडर्स जिनके ऊपर कोई ना सत्य है ना
Well, that's some big breaking news which is coming in. Sources are telling us about the extradition case. The details inside track only here on Times Now. In the absence of any extradition treaty with Antigua, remember in 2018 there was Mehul Choksi extradition was applied for under the UN Convention Against Corruption. Choksi at the time managed to get the citizenship of Antigua in November 2017. He, along with his wife Preeti Choksi, had then fled India on the 4th of January. The couple first went to America, and sometime in mid-2019 they had then landed in Antigua. But what really is going to be the way forward from here? Let me go across to Bhavtosh Singh, our senior editor, who's got this inside track. Bhavtosh, post the extradition trial, what has happened? Has anything happened on that front as well? Because now there are serious charges being leveled against Indian agency and their sleuths' alleged kidnapping of Mehul Choksi as well. Well, one of the grounds on which Interpol had rejected or at least revoked the red corner notice of Mehul Choksi is the alleged abduction, and his lawyers have used that, made a representation before Interpol, and this is coming at a time when India hosted the General Assembly of Interpol. Having said that, Antigua and their authorities never cooperated with Indian agencies. Way back in August 2018, Indian agencies, Indian MEA had in fact made a representation before Antiguan authorities asking that he should be extradited because his passport has not been suspended and cancelled, and the Antiguan authorities said that he had in fact taken the citizenship in November 2017. The first FIR in this PNB scam was filed in February, but it was way back in 4th June 2018 that he fled the country with his wife. Remember, Meghna, he first went to New York. He boarded a flight from Bombay to New York, and then he stayed there in New York and crossed across USA, and sometime in June he landed in Antigua. It was because of a blue notice that was issued by Interpol that he was located in Antigua, but even after a lot of diplomatic effort, his extradition trial has not started. Now it's up to the Interpol to issue a red corner notice. Once there is a revocation of a red corner notice, he can freely travel across the globe. Well, this is very interesting. So now he can freely travel across the globe, and this is something that the opposition is used to say, that the ED and the central agencies are being used not for fugitive, economic fugitives such as Mehul Choksi, but to target the opposition parties. Massive political face-off also ensuing. Thank you so much, Bhavtosh, for the details.